Assalamu alaikum, everyone. I hope you guys are all doing well. So today in this session, we are going to discuss this paper from May, June 2021. It's actually not a paper that was conducted in May, June. In Pakistan, this was the July series. July mein exam hua tha, mini series ka. It's basically that paper. So this is what we're going to discuss today. It had a pretty low threshold. I think it was around 48 out of 100, which is extremely low for an A. The reason for that is because my questions stay thode se, which were kind of tricky, but still, even considering that, it was a pretty low threshold. So keep that in mind while we do this paper. Now, before we begin, just a reminder that you can also find other yearly past papers solved on this channel. You can find the link for that in the description below. 2016 to say 2020 ke, you'll find a lot of paper 2 solved videos on the channel. The link for that is in the description. You'll also find topical past papers and key and a quick review of concepts for some of the major topics. Again, you'll find links for that in the description below. All right, so let's begin with this paper then. So this is the July series paper. Its code bhi aapko isliye thoda sa different nazar aa raha hai. Normally it's 4024. You can go get different context mein paper ho raha tha, different month mein paper ho raha tha. Iska code yahan pe different hai, but actually it's the same syllabus 4024. So don't worry about that. It's basically our same syllabus. Okay, so let's begin with this. Okay, so it says one day, 12 employees in an office recorded the distance they drove to work and the time it took. The table shows the distances in kilometers and the times in minutes. So ye two sets of information yahan pe diye hue. It says on the grid, we have to complete the scatter diagram. The first 6 points have already been plotted. The 6 points aapke paas plotted hai. The rest of these 6 points, you've got to plot them. Yeah, so you've got to complete the scatter diagram. The first part mein kaha hai aapko ye plot karna. Let's do that. So on the x-axis, you see you've got distance. On the y-axis and the vertical axis, you've got time. So aapne uska dhyan rakhna hai ki aap correct axis ke upar plot kar rahe ho. So what's the first point that we've got here? We've got 35 and 40. So let's plot that first. 35 is going to be here. And then 40 on the vertical axis, that's going to be somewhere here. So that's first point. Usne baaki sare points cross se represent kiya hai. So it's better that you do it using a cross as well. So this is your first point. Achha, then you have 20 and 29. 20 and 29, that's going to be here. 32 and 40. That's this point here. 35 and 48. 35 and 48, that is going to be right here. 22 and 33. That's this point here, 22 and 33. And then finally, you've got 39 and 46. 39, 46, that point is going to be right here. Okay, so aapne sare points plot kar diya. That completes the scatter diagram. That gives you 2 marks. So you've got to get those 6 points correct to get those 2 marks. Agar usme se ek bhi mistake hogi, to aapka 1 mark cut jayega. So all 6 have to be correct to get all 6 marks, all 2 marks, both the marks for this. Okay, so that's the scatter diagram. The second part says, what type of correlation does the scatter diagram show? So basically, do hi options hoti hain hamare paas, ya to positive hota hai, negative hota hai, right? So if you look at the diagram, going from left to right, we're going upwards, right? Upar ki taraf ja rahe hain. So that's a positive correlation. So distance बढ़ रहा है, the time भी बढ़ रहा है. So you'll say this is positive correlation. That's pretty straightforward. Then in the next part, it says draw a line of best fit on the scatter diagram. Line of best fit हम कैसे draw करते हैं? एक आपने देखना होता है कि roughly it should be the same number of points above the line and below the line. और वो points के दरम्यान में से इस तरह से pass कर रही हो कि overall roughly again distance जो है वो point से approximately same हो, बहुत ज़्यादा मतलब approximate distance जो है point से बहुत ज़्यादा नहीं,
ठीक है, और एक तो पॉइंट्स के दरमियान से इस तरह पास करे कि ऑलमोस्ट हाफ पॉइंट्स ऊपर हो, ऑलमोस्ट हाफ पॉइंट्स नीचे हो, और ट्रेंड आपका वही बन रहा हो, ठीक है. सो लेट्स डू दैट. Let's draw a line through these points. Now it doesn't have one single answer. Different people can end up with different lines here, and that's perfectly okay. Let me try one here. So total 12 points, all right? So one possible line could look something like this. So we've got 5 points below this and about 7 points above. And that's pretty much passing through the middle of these points. ठीक है, जो डायरेक्शन आपकी वही लग रही है जो आपके points की डायरेक्शन. So that's one possible line that you could draw through these. That should be okay. Walaikum assalam, Ibrahim. So that's the line of best fit that we could draw through these points. Now it says another employee drove a distance of 30 kilometers to work. Use your line of best fit to estimate how many minutes they took. So आपने क्या करना है अब? 30 minutes, 30 kilometers. 30 kilometers आपके यहाँ पे x axis के ऊपर आ रहा होगा. 30 के corresponding आपने जाके देख लेना है what point you've got on the line on the vertical axis. So 30 के ऊपर what I'm getting is something around 40. ठीक है, so 40 के आसपास मुझे यहाँ पे point मिल रहा है. So that is what it is going to be. तो आपने अपने ग्राफ पे देखना है, जो आपके ग्राफ पे वैल्यू आ रही होगी, that is what you're going to take here. So मेरे ग्राफ पे जो मैंने line of best fit बनाई है, this is giving me about 40 minutes. So that's what I'm going to write here. I'm going to say this is 40 minutes, and that's my result here. Okay. So that was the first, that was part A of question number 1. Let's move on to the next one. So now we've got part B. Now it's unrelated to what we had earlier. It says there are 150 employees at the company. The table shows the distances in kilometers. Okay, it is actually related to that, लेकिन उसमें कोई खास मेरे ख्याल है use नहीं होगा पिछले graph का. The table shows the distances in kilometers each employee travels to work. आपको table में information दी हुई है 0 से 10 kilometers travel करते हैं 25 employees, and similarly we've got the rest of the table here. There are 150 employees in total, so keep that in mind. It says calculate the percentage of employees who travel more than 25 kilometers to work. 25 kilometers से ज़्यादा जो travel करते हैं to work, आपने वो percentage find करनी है. Now, if you look at the table, distance आप देखें, distance आपके पास किधर आ रहे हैं? 25 distance is basically this. तो ये class क्या represent कर रही है? This is 20 to 25. Okay, तो 25 से ज्यादा वाले कौन से लोग होंगे? Basically इस क्लास के बाद वाले जो लोग हैं, which is 36 here and 19 here. What's the total for them? 36 plus 19. वो आप उनको add कर लें. ये दो numbers आपको चाहिए वहां से. 36 plus 19. These are the two that satisfy your condition कि जो 25 किलोमीटर से ज्यादा travel करते हैं. Out of how many? Out of 150. So इसको divide कर दे 150 से. इसकी percentage आपको calculate करनी है, multiplied by 100%. You can just evaluate that from a calculator. You'll get that percentage that you need. So let's see what that gives us. 36 plus 19 divided by 150 into 100, and that gives me 36.67%. I can just write it like that, 36.67%, and that should be okay. All right. Now it says calculate an estimate of the mean distance. Mean find करना है. You've got group data. Group data के अंदर आप mean कैसे find करते हो? आपके पास एक formula होता है. What's that formula? Sigma fx divided by sigma f. Okay. लेकिन अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको कुछ calculation करनी पड़ती है जब ये इस तरह से class intervals दिए होते हैं. Frequencies तो आपके पास है. So this is frequencies. F आपके पास है. What about X? Okay, sorry about that. Let me just get back to that. Yeah. What about X? How do you figure out X from there? हर class में आप क्या करते हो? उसका midpoint find करते हो. So let's add another row here that represents X. हर class का midpoint निकालेंगे. Yes, that's good. So 0 to 10 का midpoint. इन दोनों को add कर लें, 2 से divide कर दें, right? So what do we get from this? 5. Midpoint of 10 and 20, that's 15.
20 and 25, that's going to be 22.5. 25 plus 20, whole divided by 2. 25 or 30 ka midpoint, that's going to be 27.5. And then you've got 30 or 60 ka midpoint, that's going to be 45. So you find the midpoints of each of those class intervals. Midpoints आगे, अब आपको क्या करना है, fx कैलकुलेट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. ये जो फ्रीक्वेंसी वाली रो है और जो x वाली रो है, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई कर दें, you'll get your fx. Okay, let's do that. 25 into 5, that's 125. 28 into 15, let's calculate that. 28 times 15, that is 420. 42 into 22.5, that's giving me 945. ये आपने कैलकुलेशन टेबल में कर लेनी है ताकि कोई एरर ना हो, उस पर डायरेक्टली करने की कोशिश ना करें. Write it down, and that's going to reduce the chances of careless errors. 36 into 27.5, that gives me 990. And then 19 into 45, that is 855. ये मेरे पास सारे fx आ गए, fx. Okay. But what we want is we want sigma fx. Sigma का मतलब होता है sum of all fx. इन सबको आपने add कर देना, ठीक है? इन सबको total कर लें और देख लें आपके पास वो क्या आता है. 125 plus 420 plus 945 plus 990 plus 855, and that gives me 3335. That is sigma fx. Sum of all fx. ये मेरे पास आ गया, ठीक है? What do I do now? Sigma f भी चाहिए, यानी कि frequencies का sum चाहिए मुझे. Sigma f, वो आपको पहले से पता है, 150. आप इन सबको total भी कर लोगे, आपके पास 150 ही आएगा. This is your sigma f. So you've got your sigma f, you've got your sigma fx. बस वो formula के अंदर input कर दें. 3335 divided by 150. वो कैलकुलेशन आप टेबल में शो कर दें, जो आपने इस तरह ने शो कर दिया इस तरह से. That's going to be enough. That will be okay. इसका आप डिवाइड कर दें 150 से. You see what you get. So I'm getting 22.23 from this, and that is going to be your final result. If you want to round it off to 3 significant figures, that's going to be okay. You can do that, or you can just leave it like this, and that's also fine. ये आपके पास आ जाएगा 22.2 kilometers. That is the mean distance. ठीक है, let's move on. That was question number 1. Let's move on to question number 2 now. It says Zara works for 5 days each week. Each day she works from 8 until 12:30 and from 13:15 until 17:00. She is paid $15.4 per hour. So she's working 5 days each week, and she's paid this much per hour. और उसने hours भी रखे हुए, कितनी देर वो काम करती है every single day. Work out how much Zara earns in 1 week. 1 week में पूरा वो कितना earn करती है. Now, how do you figure this out? उसकी जो earning हमें दी हुई है, उसने दी हुई है per hour rate दिया हुआ. Right, so this many dollars per hour, that's what she is earning. Now we have to figure out कि वो number of hours उसके कितने बनते हैं first of all in every week. ठीक है, 5 days every week है, तो हर day के पहले निकालें number of hours. Let's figure that out. 8 to 12:30. 8 से लेकर 12:30 तक, how much is that? That is 4 hours and 30 minutes. ठीक है, so 8 से 12 तक 4 hours हो जाएंगे. Then you've got 30 more minutes, so 4 hours 30 minutes. That's what you get from that. अच्छा, next 13:15 से लेकर 17:00. Again क्या कर सकते हैं, 14 से लेकर 17 तक कितने हो गए आपके पास? 3 hours. And then 13:15 से लेकर 14 तक you've got 45 more minutes. ये आपके पास इतना टाइम आपके पास हो गया उस सेकंड टाइम स्लॉट के अंदर. 4 hours 30 minutes and 3 hours 45 minutes. ये आपके पास 2 टाइम स्लॉट्स हैं. इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले तो, ताकि टोटल हमारे पास आ जाए in terms of number of hours and minutes. What do we get from that? 4 hours 30 minutes and 3 hours and 45 minutes. Now there could be many different ways of adding this up. You can do it whatever way you prefer.
So one way could be क्या 4 और 3 को add कर दो. What do you get from that? You get 7. 30 और 45 को add करो, you get 75. लेकिन 75 minutes में से 60 minutes तो आपका 1 hour बन जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 8 hours और बाकी कितने बचे आपके पास? 15 minutes. That's what you got. 8 hours and 15 minutes. अच्छा, अब मसला क्या है? आपको इसको decimals में convert करना है. 8 hours 15 minutes को decimals में convert करना है. How do you do that? So you got 8 hours. ये तो आपके पास already hours के अंदर है. Then you've got 15 minutes. 15 minutes को हम convert कर लेते हैं hours के अंदर. क्या करेंगे? 15 over 60. What is that going to give us? That's going to give us 0.25. So we've got 8 plus 0.25. That is 8.25 hours. ये उसका time आ गया for every single day. This is how much she works every single day. Okay, now she is working 5 days each week और उसके total number of hours कितने हो जाएंगे? वो आप evaluate कर लें अलग से if you want. 8.25 into 5. You can do that on your calculator. 8.25 into 5. Let's see what that turns out to be. That is giving me 41.25 hours. Now, what is the total that she earns? Total earning. This is the number of hours that we've got. 41.25. You can multiply that with how much she gets per hour. That is 15.40. And you'll get your final earning. ये आप देखें क्या आ जाता है. This is giving me $635 and 25 cents. So that's 635.25. That is what you've got. Dollars में जब भी होती है amount, उसको आपने 2 decimal places तक लिखना होता है, because वो 2 decimal places आपके cents पे represent कर रहे होते हैं. If they haven't specified any specific level of accuracy, आपको 2 decimal places आप वहाँ पे लिखने होते हैं. ठीक है? So this is what we get from this. Let's look at part B. It says Samuel works for 40 hours each week. He is paid $13.6 per hour. So he's earning, he is working 40 hours per week. $13.6 per hour उसको मिल रहा है. He pays 7.5% of his total earnings in tax. Okay, 7.5% tax में चला गया. The rest of his earnings are paid into his bank account. Calculate the amount paid into his bank account each week. अच्छा, सबसे पहले तो हम total earning उसके calculate कर लेते हैं. We know he is working 40 hours every week और $13.6 उसको मिल रहा है per hour. तो total earning कितनी होगी? Let's evaluate that first. $13.6 per hour मिल रहा है. इसको number of hours से multiply कर दें. What do we get from that? 13.6 into 40. That gives me 544. This is how much he is earning every week. $544. Now 7.5% of this goes in tax. बाकी जो है वो बैंक अकाउंट में जाती हैं. अब बैंक अकाउंट में कितनी गई हैं वो फिगर आउट करना है. अब देखिए 7.5% अगर टैक्स कर दिया, what percentage are you left with? 100 में से माइनस कर दें. 100% minus 7.5%. कितना बचा आपके पास? 92.5%. All you've got to do is you've got to calculate 92.5% of $544. को आप evaluate कर लें. 544 into 92.5 divided by 100, and that's going to give you the amount that is paid into the bank account. आप ये भी कर सकते थे कि आप टैक्स निकाल लेते 7.5% और फिर 544 में से वो माइनस कर देते. That's also fine. You could do it either way. Let's see what we get from this. Multiply by 92.5 divided by 100, and that is giving me $503.2. So 503.2. Again, it's dollars. तो dollars को हम अक्सर अगर decimals में आ रहा हो, हम उसको 2 decimal places तक लिखते हैं. That's what we get, $503.20. That's your final result here. Okay, let's move on. Part C.
So now we've got Jacob, who invests $750 in an account that pays 2.1% per year simple interest. Okay, so 2.1% per year simple interest. That's what Jacob is getting. You've got another person, Mary, who invests $750 in an account that pays P% per year compound interest. They each leave the money in their account for 5 years. So दोनों 5 years के लिए invest कर रहे हैं. At the end of 5 years, there is the same amount of money in each account. तो उन्होंने same amount invest की और 5 years के बाद जो amount इनके account के अंदर है, that is also the same. That's also equal. Now we have to calculate the value of P and we have to give our answer corrected to two decimal places. अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता है कि after 5 years, the total amount is going to be the same in both accounts. तो हम पहले Jacob का निकाल लेते हैं because उसकी सारी information हमारे पास है. Now for Jacob, what do we know? Initial amount, उसका जो principal है, what's that? That is $750. That's the principal amount that Jacob has. What is the interest? Interest जो हमारे पास आ रहा है, उसको हम इसके फॉर्मूला के अंदर हम अक्सर R से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है. रेट इज 2.1%. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. कितनी देर के लिए इन्वेस्ट किया, हम यहाँ पे T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको. नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज 5. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है फॉर जेकब. इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें. इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है फॉर सिंपल इंटरेस्ट? इट्स PRT over 100. It's just input values. Principal is 750 multiplied by the rate, that is 2.1 over 100. So basically 100 जो divide जो हो रहा होता है वो इस percentage की वजह से हो रहा होता है. Overall divide कर लेते हैं, that's also fine. And we've got time, that is 5. That's going to give us the interest amount. इससे हमें सिर्फ interest amount मिलेगी. Let's figure out what this is. 750 into 2.1 into 5 divided by 100. This turns out to be 78.75 for me. ये मेरे पास interest amount आ गई. Now, what is the total amount after the 5 years? Total amount आपको कैसे मिलेगी? जो initial amount उसके पास इतनी थी $750, उसमें ये interest add कर देंगे, वो आपके पास total amount आ जाएगी, या आप कह सकते हैं final amount आ जाएगी after the end of 5 years. Let's see what that turns out to be. The final amount is 750 plus 78.75. You can see what that gives you. That should be $828.75. That is the final amount that Jacob has after 5 years. Okay. And now, once we know this, हमें पता है कि मैरी की जो फाइनल अमाउंट है वो भी सेम होनी चाहिए, राइट? उसने वही कहा कि उनके एंड पे जो अमाउंट होगी बैंक के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर बोथ ऑफ देम. लेट्स थिंक अबाउट मैरी नाउ. नाउ रिमेंबर, मैरी इज अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? रिमेंबर, we've got this formula for that. A equals principal into 1 plus R over 100 raised to power n कह सकते हैं, इसको भी आप t कह सकते हैं. That's your preference. t का मतलब है number of years. n कह लें, that's also number of years. एक ही बात है, कुछ किससे भी आप represent कर सकते हैं. मैं यहाँ पे भी t से किया है, तो वहाँ पे भी t से कर देते हैं. So that's going to give us the final amount. Remember, ये वाला फॉर्मूला आपको इंटरेस्ट देता था, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला. जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, ये आपको फाइनल अमाउंट बताता है आफ्टर द एंड ऑफ द टाइम पीरियड. आपको फाइनल अमाउंट यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी, आपको 750 ऐड नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर. ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है फॉर मैरी? वी नो द प्रिंसिपल अमाउंट हियर इज आल्सो $750. द रेट हियर इज P%. टाइम इज आल्सो 5 years here. ये हमारे पास मैरी की इंफॉर्मेशन है. लेट्स जस्ट इनपुट वैल्यूज. अब देखिए, हमें पता चल गया है कि फाइनल अमाउंट क्या होनी चाहिए.
फाइनल अमाउंट तो वही होनी चाहिए जो जेकब की है फाइनल अमाउंट, दैट्स 828.75। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं 828.75 के साथ। लेफ्ट साइड पे 828.75 आ गया। Now on the right side, we've got the principal, that is 750 into 1 plus rate, that is P, R की जगह पे P डाल दें, divided by 100, whole raised to power T, what's T? T is 5, T की जगह पे 5 input कर दें। Now we've got to solve this equation और P की value figure out करनी, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, we can take the 750 on the other side, we can divide that on the other side. Let's see what that gives us. 1 plus P over 100 whole raised to power 5, 750 वहां पे जाके डिवाइड हो गया, 828.75 divided by 750, and that gives me 1.105. ओके, अब देखें यहाँ पे पावर 5 आ रही है। अब पावर 5 को हमें किसी तरह से एलिमिनेट करना है, ठीक है? पावर 5 को कैसे एलिमिनेट करें? What we can do is हम दोनों साइड पे 5th रूट ले लेते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर 5th रूट ले लेते हैं, राइट? या तो आप 5th रूट कह लें, यू कैन राइट इट लाइक दैट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग दिस। और यू कुड से लेट्स रेज बोथ साइड्स टू द पावर 1/5, यानी कि 5 का रेसिप्रोकल, 5 के रेसिप्रोकल आपने पावर ले ली दोनों साइड्स के ऊपर। इसका फायदा क्या होएगा कि राइट साइड से पावर हट जाएगी, पावर आपकी खत्म हो जाएगी राइट साइड से, और आप P की वैल्यू फिगर आउट कर सकोगे। अब ये लेफ्ट साइड पे ये आप कैलकुलेटर में डालोगे, 1.105 होल रेज टू पावर 1/5, ये कैलकुलेटर में डाल के इवैल्यूएट कर लें। लेट्स सी व्हाट दैट गिव्स अस। 1.105 whole raised to power 1/5, that gives me 1.0202 on the left side. On the right side, you see you've got 5 here, you've got 1/5 here, ये तो cancel हो जाएंगे, you're just left with 1 plus P over 100, ठीक है? अब 1 लेफ्ट पे चला जाएगा, and that's going to give you 0.0202 equals P over 100, and P is going to turn out to be 2.02। ये आपके पास P की वैल्यू आ गई, तो P की आप वैल्यू आप वहां पे लिख दोगे, that turns out to be 2.02, and that's your final result there. Okay, so that's what we had to do here. So this is part C of question number 2. Okay, I hope that makes sense. Let's move on to the next question. Okay, now this is graphs of functions. We have to complete the table for y equals minus x cube over 2 plus 3x plus 1. ये अपना टेबल कंप्लीट करना है, just have to put the value of x inside, x की वैल्यू -3 इनपुट कर दें वहां पे, और देखें आपके पास क्या आता है। minus into -3 का cube, that's going to be 27 over 2 minus 9 plus 1, and I'm getting 5.5 here. So this value is 5.5. Now you just have to plot these values and draw a curve. It's a cubic curve. To remember cubic curves, आपके पास क्या क्या हो सकती हैं, shape क्या हो सकती है? You could have something like this, you could have something like this, or you could have this or this. ये 4 shapes होती हैं possible, इनमें से कुछ होगी। ये negative है, तो उसमें अगर आपको पता है तो ये इस तरह की shape most likely बन रही होगी। Anyway, let's actually plot that. ये आपको जरूरी नहीं है पता होना। If you know that, that's good. Otherwise, you just plot the points and see what you end up with. -3 and 5.5. Where is that point going to be? -3 and 5.5. That is right here. Okay. Next, we have -2 and -1. -2 and -1. That is here. -1.5, -1.8. That should be somewhere here. Scale का ध्यान रखना है, vertical axis के ऊपर 1 small box is representing 0.2. Horizontal axis के ऊपर 1 small box is representing 0.1. Okay, so -1 and -1.5, that point is going to be here.
0 and 1, that's right here. 1 and 3.5, that comes here. 1.5 and 3.8, 1.5 and 3.8, that should be somewhere here. 2 and 3. And finally, we've got 3 and minus 3.5. That is going to be below the x-axis. That's right here. Okay, so if all the points are plotted correctly, you at least get 1 mark for that. And then you have to join these points using a smooth curve. Straight lines se nahi join karna. You've got to make a curve. Let's try that. Okay, so what do we get? ये आपको pencil से draw करनी है, so that if you end up getting something wrong, you can erase it. अपनी curve को आप ठीक कर सकें. I always give it a few iterations क्योंकि first time नहीं सही बन रही होती है, तो आपको erase करके थोड़ा सा curve को अपनी सही करना पड़ सकता है. Just try to make it as smooth as possible ताकि आपकी आगे वाली calculations, for example, अगर आपको tangent draw करना है या कोई values figure out करनी है उससे, वो reasonably accurate आ रही है. So this is how the curve may look like. You know, of course, it depends on your drawing skills. Mine are not very good, but at least I'm trying. आपने भी देखना है कि curve आपकी smooth होनी चाहिए. Straight lines नहीं बनाने. ठीक है? So this is what the curve is going to look like. ये आपकी curve आ गई. ठीक है? So that's 3 marks. Let's move on. Okay, now it says, by drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at x equals 2. X equals 2 पे आपने इसका gradient draw करना है. अच्छा, इसके tricks होते हैं कुछ कि आप calculation से gradient find कर लो और फिर अपना tangent उसके हिसाब से बना दो. So if you know, for example, differentiation या फिर इसको वैसे भी estimate करने के तरीके होते हैं, if you've learned that, that's going to be helpful. Otherwise, just do the standard process. आप क्या करो, आप जाके वहाँ पे tangent इस तरह से draw करो. X equals 2 पे बनाने, remember, so that's this point here. 2 के ऊपर जो point आ रहा है, you should make it some like this के उस point के दोनों sides के ऊपर और नीचे जो curve से आपका distance है, ये distance gap है, वो approximately equal हो, right? Approximately equal gap आ रहा हो दोनों sides के ऊपर. So that's what you think about when you're drawing tangent. Let me try that here now. Let's see how it's going to look like. Yeah. Okay, so let me adjust it a bit now. Okay, so unfortunately, I can't really edit it a lot, but I think it's reasonably okay. This is what your tangent is going to look like roughly. ये आपका tangent आ जाएगा. ये आपने draw कर लिया. उसने कहा estimate the gradient of the curve at this point. आपने gradient estimate करना है. जब आपने tangent draw कर लिया, तब आप क्या करोगे? अब आप उस tangent के ऊपर कोई भी 2 points ले लोगे, right? So I can take this point here, for instance. So any 2 points that are easier to read. So let me take 1 point here. ये point ले रहा हूँ मैं. What are the coordinates for this? This is going to be 2.9 on the x-axis, and the y-axis it says 0. 2.9 and 0, that's 1 point. दूसरा point अगर आप चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, जो आपका point है, जिस point पे आपने tangent draw किया. So and that's going to be okay, उसमें कोई मसला नहीं है.
or you can take another point. Let's take one on the other side. यहाँ पे एक साइड पे दोनों पॉइंट्स लेने, वो इतने एक्यूरेट नहीं आएंगे. एक पॉइंट एक साइड पे ले लें, दूसरा पॉइंट दूसरी साइड पे ले लें. उस पॉइंट के तो ऊपर वाला पॉइंट मेरे पास आ रहा है, that is 1.5 and 4.8. So I've got these 2 points, and now I can calculate the tangent, the gradient of the tangent, y2 minus y1 over x2, y2 minus y1 over x2 minus x1. Let's do that. 4.8 minus 0. So calculation यहाँ पे कर लेते हैं. 4.8 minus 0 and 1.5 minus 2.9. 1.5 minus 2.9. ये evaluate कर लें calculator से and see what you get from that. 4.8 divided by 1.4, and that is giving me minus 3.43. So that's what you can write there. That's minus 3.43. That's the gradient that I'm getting. Okay. Iska of course interval diya hota hai marking scheme ke andar. So if you're reasonably accurate, you'll most likely fall inside that interval. Your tangent jo hai wo bahut zyada koi off nahi bana diya to. ठीक है? So that's what we get here. Now the next part says, by drawing a suitable line on the grid, estimate the solutions of this equation. Okay, now that's the part that is considered tricky by most students. Let's have a look at this. अच्छा, ऊपर curve क्या थी हमारे पास? Curve हमारे पास क्या रही थी? Curve was y equals minus x cube over 2 plus 3x plus 1. Let's write that down here. Minus 3x cube over 2 plus x. Sorry, plus 3x plus 1. So we had plus 3x plus 1. This was the curve. Okay. उस curve को आपने use करना है to solve this equation. Now, how do we think about this? हम क्या करते हैं? हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे. We've got x cube over 2. Let me actually just go back there again. So मैंने फिर वो गलत लिख दिया यहाँ पे. Should have been minus x cube over 2. There was no 3 there. So that's what it looks like. Okay, so ये आपकी curve थी जो original ऊपर थी. So copy करते हुए आपको जरा ध्यान रखना होता है. Equation क्या है? x cube over 2 plus 1 equals 2x. ये आपके पास equation है. इसको एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं, ऊपर नीचे. आपने करना क्या है? आपने इस इक्वेशन के एक साइड के ऊपर किसी तरह से ये चीज ले आनी है. एक साइड के ऊपर आपने किसी तरह से ये चीज ले आनी है, minus x cube over 2 plus 3x plus 1. एक साइड पे आपने ये चीज बना लेनी है. Now how can we do that? You see, you've got x cube over 2 right now on the left side. ऊपर आपके पास minus x cube over 2 है. So what we can do here is we can take this x cube over 2 on the right side. इसको right पे ले जाते हैं. Let's do that. इसको right पे लेके जाते हैं. हमें क्या मिलता है वहां से? Minus x cube over 2 plus 2x. ये आ गया हमारे पास. ठीक है. अब minus x cube over 2 ऊपर था, minus x cube over 2 नीचे आ गया. ये हमारे पास हो गया. So this is done. Okay. अच्छा. Now let's think about the x term. ऊपर हमारे पास 3x था, यहाँ पे 2x है. हमें 2x को किसी तरह से 3x बनाना है. हमें 2x को किसी तरह से 3x बनाना है. तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड्स के ऊपर. Now again I'm doing it step by step. पहले मैंने x क्यूब को कर दिया. x क्यूब को हमारे पास हो गया उस तरह से. अब 2x को मैंने किसी तरह से 3x बनाना है. तो 2x में क्या करना पड़ेगा? मुझे x ऐड करना पड़ेगा. So I can add x to both sides. अब एक साइड पे कुछ नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड्स पे करना पड़ेगा. दोनों साइड पे आपने x ऐड कर दिया. क्यों? ताकि ये मेरे पास राइट साइड पे 3x आ जाए. What do I get after that? ये करने के बाद मेरे पास क्या हो गया? I've got x plus 1 equals minus x cube over 2 plus 3x. This is what I have on the right side now. Now I'm almost there. मेरे पास इतना पार्ट आ चुका है. क्या चीज रह गई है? सिर्फ ये plus 1 रह गया. plus 1 मेरे पास नहीं है राइट साइड के ऊपर. तो मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे एक plus 1 भी कर लेता हूँ. Now of course if I have to balance that, I have to do plus 1 on the left side as well,
And now on the right side, I've got minus x cube over 2 plus 3x plus 1. On the left side, I've got x plus 2. मेरे पास exactly वो चीज आ गई है right side के ऊपर जो मेरे पास ऊपर थी. So I've got this thing on the right side now. ये चीज मेरे पास right side पर आ गई है. On the left side now, I've got x plus 2. ऊपर मेरे पास y था. तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने line draw करनी है, what is that line going to be? That line is going to be y equals x plus 2. ये line मुझे वहां पे ऊपर draw करनी है. ठीक है, that's one way to think about this. Of course, there are other ways of thinking about this as well. या पूरा का पूरा जरूरी नहीं है कि आप step by step एक एक step में करो. Just think of it directly as well if you wanted. For example, ये दोनों steps आप एक साथ कर सकते हो. X भी आप add कर देते और 1 भी add कर देते इसी line के अंदर, and that would have been okay. ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए दो अलग-अलग steps में किया है. You can do it together as well. That's going to be quicker, and that's going to work. Okay, so you've got y equals x plus 2 here. ये line आपको जाके draw करनी है. It's a straight line. How do you draw straight lines? आप कोई भी 2 points लेने हैं, उनको join कर देना. ठीक है? Let's take 2 points. X की कोई भी value ले लें, graph पे देख लें grid में क्या क्या numbers आ रहे हैं. 0 से 3 on the so -3 to 3 on the horizontal axis and -6 to 6 on the vertical axis. तो graph से बाहर नहीं जाना बस. So एक point ले लेते हैं. Let's say x equals 0. 0 input करते हैं. Y की value क्या आती है? 2. Take another point. Normally we prefer कि points थोड़े से distance के ऊपर लें, उससे values आपकी graph थोड़ा सा accurate बनता है. तो दूसरा point हम ले सकते हैं. Let's say अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, 3 के ऊपर I get y equals 5. I've got 2 points, 0, 2 and 3, 5. Let's go to the graph and plot them. So I've got 0, 2 and 3, 5. Okay, so 0, 2 point is going to be here and 3, 5 is going to be right here. ये 2 points आ गए मेरे पास. इनको मैं join कर देता हूँ using a straight line. Okay, so again, इसके ऊपर थोड़ा सा line का issue आता है. I'm going to do that on the side and then just copy that here. That's going to be quicker. Okay, so this is what my line is going to look like. ठीक है, जो उन दोनों points से पास कर रही है, ये मेरे पास line आ गई. Now, what do I have to do? I have to figure out the solutions of this equation. So basically, आपने देखना है graph के ऊपर points of intersection आपके पास कहाँ पे आ रहे हैं, कौन सी values of x के ऊपर आ रहे हैं. Let's write them down now. We've got one point here. X के ऊपर ये क्या value बन रही है? This is -2.2. That's one possibility. Then you've got another solution here. That's right here. ये मेरे पास एक दूसरा solution बन रहा है. This is 0.55, 0.5 or 0.6 के दरम्यान में. It's going to be 0.55. And then the third one is right here. You can say that is basically this point here, which is 1.7. So I've got these 3 points. ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे. -2.2. -2.2. 0.55. And 1.7. These are the 3 solutions that I have here. ये मेरे पास final answers are. Okay, so that's the graphs of functions वाला question here. That's what we had to do here. Okay, let's move on. Let's move on to the next one. So now we've got sets. So we've got a universal set given which says x is an integer between 1 and 10. So basically ये क्या हो जाएगा? It's 1, 2, 3 all the way up to number 10. This the set P is defined as a prime number. So basically universal set क्या है? 1 से लेकर 10 तक. The prime number is 1 से लेकर 10 तक कौन से होते हैं? Remember, 1 is not a prime number. You've got 2, 3, and then you've got 5 and 7, and that's it. ये आपके पास 4 numbers हैं
from 1 to 10, which are prime numbers. Factor of 18, factors of 18 क्या क्या हो सकते हैं? Remember, 1 is also a factor. 1 is a factor of every integer. So 1 be आपका factor. Then you've got 2, 3, 4 is not a factor. 5, 6 is a factor. 7, 8, 9 is a factor. So you've got these 5 factors there. Okay, आपके पास numbers are. Now, first of all, it says complete this Venn diagram. Okay, so एक set P है, एक set F है. सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप सेट वाला काम कर रहे हो तो या तो अब सबसे पहला काम इट्स गोइंग टू बी इजियर कि आप जो इंटरसेक्शन है ना वो फिगर आउट कर लो. ठीक है, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है दोनों सेट्स के अंदर. सो यू गॉट 2 कॉमन, यू गॉट 3 कॉमन एंड दैट्स इट. 2 और 3 कॉमन है वो दरमियान में आ जाएंगे. यू गॉट 2 हियर एंड 3 हियर. ठीक है, अच्छा 1 उसने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे एफ के अंदर. सो और कौन से आ रहे हैं एफ के अंदर जो नहीं अभी तक हमने लिखे? 6 आ गया और 9 आ गया. पी के अंदर कौन से रह गए? वी गॉट 5 हियर एंड 7 हियर. नाउ व्हाटएवर आर द रिमेनिंग नंबर्स 1 से लेकर 10 तक जो किसी भी सेट में नहीं आए वो बाहर लिख देंगे हम. सो वी गॉट 4 लेफ्ट. सो वी हैव 4 आउटसाइड. 5, 6, 7, 8. वी गॉट 8 लेफ्ट एंड वी गॉट 10 लेफ्ट. ये तीनों नंबर्स हमने बाहर लिखती है. तो टोटल काउंट कर लें. देयर शुड बी 10 numbers in total and yes that turns out to be 10 in total. अच्छा, it says write down the elements of P intersection F. P intersection F का क्या मतलब है? That's this region here जो common है दोनों के अंदर. There are 2 and 3. आपने elements लिखने हैं वो आप अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं. सेट का नहीं कहा उसने, सिर्फ elements लिखने हैं तो आप लिख देंगे 2 and 3 like this. So you'll say it's 2 and 3. ये दो elements आपके. अच्छा, now it says state n of P complement union F complement. P complement union F complement. What does that mean? n का मतलब होता है number of elements. Number of elements जो आपके पास इस सेट के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, अच्छा how do we think about this? P complement का मतलब है P से बाहर वाला सारा रीजन. P से बाहर वाला सारा रीजन. P से बाहर का मतलब क्या है? Everything outside of P, that's going to be all of this. ये पूरा का पूरा आपके पास P के बाहर वाला रीजन आ गया. ठीक है, this is everything outside P. यूनियन का मतलब है इसमें आपने ऐड कर देना है. इसमें ऐड कर देना है कौन सा रीजन? F के बाहर वाला सारा रीजन. ओके, F के बाहर वाला कौन सा रीजन है? F के बाहर वाले रीजन में आपके पास ये सब आ जाएगा जिसके अंदर P का ये वाला पार्ट भी आ जाएगा. So this is everything outside of F now. ये मेरे पास सारे रीजन आ गए. तो बेसिकली दरमियान वाला रीजन सिर्फ बच गया 2 और 3. 2 और 3 के अलावा बाकी सब कुछ शेड हो गया. कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 10 एलिमेंट्स थे. 2 और 3 निकाल दें. यू गॉट 8 एलिमेंट्स लेफ्ट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास. दे आर 8 इन टोटल. दैट्स वन वे टू थिंक अबाउट दिस. नाउ दोज़ ऑफ यू नो इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. P complement union F complement. That's the same thing as saying P intersection F का whole complement. Basically P intersection F के बाहर वाला सारे रीजन. तो इंटरसेक्शन के अलावा बाकी सब कुछ आप उसको डायरेक्टली इस तरह से सोच सकते थे, but it's not compulsory for you to know. So some of you might know about this, some of you might not. So this could be another way to think about this. ये इस तरह भी आप कर सकते थे. You get 8 from that as well. So that's what we do here. Okay. Acha, let's move on to the next part. Now it says Tara has these 10 number cards from 1 to 10. She takes one of the 10 cards at random. Find the probability that the card shows a square number. Acha, squares आपके पास क्या क्या होते हैं? Remember 1 is also a square. 1 square जो है वो 1 होता है. तो 1 भी आपका square है. ठीक है? So you've got 2 squared 4, 3 squared 9. These are 3 square numbers. Out of 10 cards, 3 squares हैं, तो probability of getting a square क्या होगी? 3 over 10. Tara takes one of the 10 cards at random, notes the number and replaces it. Now this is important. She's replacing the card. She's taking one card and then replacing that, and then she repeats it. Work out the probability that both cards show multiples of 4. She's taking 2 cards out. Okay.
and both have to be multiples of 4. Multiples of 4 आपके कौन से आ रहे हैं? You've got 4 here and 8 here. There are only 2 multiples of 4. Work out this probability कि दोनों cards multiples of 4 हो. Now, what's the probability of getting one multiple of 4 the first time? कितने multiples of 4 and 2? Out of how many? 10. So that's 2 over 10. First card के multiple of 4 होने की probability कितनी होगी? 2 over 10. Second card के multiple of 4 होने की probability क्या होगी? That is still 2 over 10. ये change नहीं होगी क्योंकि उसने replace कर दिया था. जब replace कर देते हैं तो probability आपकी वही रहती है, वो change नहीं होती. And that's going to give you the final result. Yeah, 1 over 5 into 1 over 5. That's going to be 1 over 25. And that's what we get here. 1 over 25. Okay. Achha, let's move on. Now it says Tara takes 2 of the 10 cards at random without replacement. So now she is not replacing the cards without replacement. Work out the probability that at least one of the cards shows a number that is greater than 7. अच्छा, greater than 7 numbers कौन कितने आपके पास आ रहे हैं? You've got 8, 9, 10. ये 3 numbers possible है. तो greater than 7 की probability आपके पास 3 over 10 है यहाँ पे. Right? So keep that in mind. It says at least one of the cards shows a number greater than 7. इसका मतलब क्या होएगा? ये भी हो सकता है कि एक कार्ड 7 से बड़ा है, ये भी हो सकता है कि दोनों कार्ड 7 से बड़े हैं. दोनों possibilities हो सकती हैं. So now let's think about the possibilities that we've got. अच्छा देखें, हम यहाँ पे list down कर लेते हैं. So let's say you've got first card and you've got second card. इसमें आप tree diagram बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं. Tree बना के अगर आपको आसान लगता है, that's going to be okay. आप वैसे भी सोच सकते हैं कि क्या possible cases हैं आपके पास. अच्छा, एक possible case क्या हो गया? That the first is greater than 7 and the second is also greater than 7. दोनों 7 से बड़े हैं. This satisfies our condition. ठीक है? अच्छा, एक और केस क्या हो सकता है? First greater than 7 है, second जो है वो less than or equal to 7 है. This also satisfies the condition क्योंकि अभी भी एक तो 7 से बड़ा है. एक और केस क्या हो सकता है? First less than or equal to 7 है, second greater than 7 है. That's the third case. That also satisfies our condition. And the fourth case is that both of them are less than or equal to 7. ये आपकी कंडीशन को satisfy नहीं करता. ये आपके पास 4 possible cases हैं. Now, there are 2 ways of thinking about this. You could either calculate these 3 probabilities और उनको add कर लेते हैं. वो आप कर सकते हैं. But there's a quicker way of doing this, and that would be कि आप ये last case की probability निकाल लें और total जो 1 होती है, probability total तो हमेशा 1 होती है ना, 1 में से इसको minus कर दें. That's another way to think about this. आप last case की probability निकाल लें. वो कैसे निकालेंगे? Less than or equal to 7 आपका first card हो. ठीक है? उसकी probability क्या है? 7 out of 10. But remember, this is without replacement. Second के भी less than or equal to 7 होने की probability पे क्या होगी? It's going to be 6 out of 9 because उन 7 में से एक तो आपने already select कर लिया. You're left with 6. Total 10 में से आपने एक already select कर लिया. Left with 9 there. ये आपके पास एक result आ जाएगा. ठीक है? Let's see what that turns out to be. Evaluate कर लेते हैं. 7 into 6 divided by 90, and that gives me 7 over 15. Okay? And now this is the case that we do not want. तो हम क्या करते हैं? Total 1 में से इसको minus कर देते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 over 15, and that's our final result here. This should be 8 divided by 15. Okay? अगर आप इनको भी add कर लेते हैं, इन तीनों को, वो भी आपके पास 8 over 15 ही आता. वो बस calculation आपको ज़्यादा करनी पड़ती. Eventually you'll get the same result from that as well. So you could do it either way. उन तीनों को निकाल के उनको add कर लेते, you would still get 8 over 15 from that. Okay? Okay, let's move on to the next one now. Abdullah, A star threshold, basically, it really depends on the paper. हर दफा बहुत ज़्यादा vary कर रहा होता है. But if you score something around 80 or above, you can be pretty sure you can be in the safe region. 80 से ऊपर अगर आप कहो
तो P2 के हिसाब से you can say you are in the A star zone. That will be pretty safe, but of course it depends on the paper. Thresholds can go up and down, but you should just aim to score as high as you can. Of course, कोई आपने aim तो maximum करना है ना, जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं इंशाल्लाह. Okay, let's move to question number 5 then. Now we've got this diagram that shows a water tank in the shape of a prism with an open top. The cross section of the tank ABCD is a trapezium. अच्छा, सबसे पहले तो ये prism है. Prism क्या होता है? एक shape होती है, वो एक तरह से repeat हो रही होती है. Okay? अब इसमें वो cross section होता है जो repeat, वही shape repeated होती है 3 dimension के अंदर. Cross section आपका क्या है यहाँ पे? It's ABCD, that's trapezium. So basically this is the cross section, ABCD. तो इसके opposite side पे, पीछे वाली side पे आप देखेंगे तो वो भी आपका ट्रेपीजियम बन रहा है. तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपकी इस तरह से सेम आ रही होती हैं प्रिज्म के अंदर. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट सेज बेस ऑफ द टैंक CDHG इज अ रेक्टेंगल. वो भी आपको नजर आ रहा है. ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर्स. AD equals BC, AD equals BC, okay, and FG and EH. Okay, so you're basically given that these sides are all equal. This is 0.5. This is also 0.5. And this is also 0.5. Trapezium की जो आपकी जो sides वाली slant heights हैं, they are all equal in length. We have to first show that the depth d meters of the tank is 0.477 correct to 3 significant figures. So basically depth उसने इससे represent की हुई है. जो vertical height कह लें आप उसको या depth कह लें, you've got to figure that out. Now how do you figure this out? Okay, let's think about it. So आपको length उसने सारी उस diagram के ऊपर दी हुई है. We've got this length given 0.95. If that is 0.95, that means this is also 0.95. Right? It's a prism. So opposite sides jo hain, they are congruent. That's 0.95. This is 0.65. The sides are equal. Okay. So there's basically symmetry. So agar aap dekhein, aapke paas is tarah ka trapezium hai. Let me actually just draw that on the side here. It's going to be easier to think about. So we have a trapezium that looks something like this. This is the trapezium. We know that this is 0.5, this is 0.5, this is 0.65, and this is 0.95. ये उसने सारी lengths आपको बताई हुई. Now, since the sides are equal, what that means is ये जो angles है ना यहाँ पे, if this is x, this is also x, and if this is y, this is also y. Trapezium के angles equal है because आपकी sides जो हैं वो equal है. Okay. Now, how does that help? Basically, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो? You can actually draw a vertical line here like this, and that would be D. ये आपको figure out करना है. And you've got a right angle triangle here, in which this is 0.5. And what we can do now is we can draw the same triangle on the other side as well. ये दोनों triangles हैं, they are equal to each other. They are congruent to each other. Right? Because वो shape इस तरह की बन रही है, दोनों side पे symmetry बन रही है. तो अगर ये नीचे वाली length 0.65 है, तो ये length कितनी होगी? You see, this is 0.95 in total. Total length 0.95 थी. Okay, sorry about that. The total length is 0.95. This length. In the middle, this length is 0.65. So how much are we left with? We are left with 0.3. 0.95 minus 0.65. What do we get from that?
we get 0.3. तो 0.3 जो है वो equally divided है sides के ऊपर. This is 0.15 and this is also 0.15. अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये define कर सकते हैं. We've got a right angle triangle, right? Right angle triangle है, हमारे पास hypotenuse है, एक side है, तीसरी side आप find कर सकते हैं. Pythagoras use कर लें. So we can say d square plus 0.15 squared, that is equal to 0.5 square, and that's going to give you the result. D equals 0.5 square minus 0.15 squared, square root of that. Let's see what that turns out to be. So they can working actually कुछ नहीं है, वो बहुत straightforward है, बस सोचने के इसमें marks है. 0.5 square minus 0.15 square, square root of that, and that gives me 0.477 to 3 significant figures. ठीक है, that's the value of D and that's what we had to prove. यहाँ पे आपने prove करना था. It's very important that you show your working clearly. Working नहीं show करेंगे आपको marks नहीं मिलेंगे उसके. ठीक है, उनके आंसर के तो marks है नहीं यहाँ पे, आंसर तो उसने already बताया हुआ खुद से. So इसमें सिर्फ working के marks हैं. Okay. Now it says calculate the surface area of the tank. Okay, now you should remember it was an open top. It was an open tank, ऊपर वाला surface नहीं है. बाकी सारे surfaces का area आपने add कर देना. ठीक है, surface area आपको चाहिए ना tank का. तो sides आप देख लें कितनी है, सारे rectangles हैं. नहीं, you've got 2 trapeziums and 3 rectangles. उनको हम add कर लेंगे. Let's figure that out. अच्छा, so we've got 2 trapeziums. We've got 1 trapezium here. This is 1 trapezium. You've got another trapezium on the back side. ये 2 trapeziums. ठीक है, इनके एरियाज निकाल लें, इन दोनों के एरियाज निकाल लें, एक का निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें. So that's the first thing we've got to do. Let's do that. So area of the trapezium, 2 into area of trapezium. Area of trapezium क्या होगा, half into sum of parallel sides. Parallel sides क्या है, 0.95 and 0.65 को add कर लें. 0.95 plus 0.65 multiplied by the height. Height ये D थी basically. उसके हमने निकाल लिया 0.477. Let's put that here. These are the areas of the trapeziums. Okay. अच्छा. उसके 2 से multiply कर दिया because there were 2 trapeziums like that. ठीक है. अच्छा. Now we've got one face on the right side. एक right side वाला face है. ठीक है. And we've got one face on the left side. ये दोनों भी एक दूसरे के equal है. Right? Because their lengths are equal. They're rectangles. इनकी एक side 0.5 है और दूसरी side क्या है? Do we know that? Yeah, so we have 1.6 here. That's the other side. So this is also 1.6. आपके पास sides हैं उनकी, दोनों rectangles हैं. 1.6 and 0.5 are the sides. उनके areas निकाल के उसे 2 से multiply कर दें because they're both the same. ठीक है? So let's do that. The rectangles 2 into 0.5 and 1.6. ये दोनों rectangles के areas आगे, जो sides वाले rectangles हैं. What are we left with? We're left with the base. ये जो नीचे वाली base है, ये रह गई है. This is the last face that we've got. इसका top open है, तो top face तो कुछ भी नहीं है. सिर्फ bottom face का आपको निकालना है. उसकी lengths क्या है? 0.65 and 1.6. That's also a rectangle. उसको 2 से multiply नहीं करेंगे because it's an open tank. What do we get for that? 0.65 into 1.6. ये आपके पास वो आ गया. Now we just add everything up. इसको evaluate कर लें, देख लें आपके पास क्या आता है. 0.95 plus 0.65 into 0.477 plus 2 into 0.5 into 1.6 plus 0.65 into 1.6. Just evaluate everything. And I'm getting 3.403 from this. 3.403.
So if you want to write it here, you can write 3.40 if you want, or 0.403 पूरा भी लिख सकते हैं, and that's also okay. ठीक है, so that's the result that we get from this. ये आपके पास area आ गया इसका, surface area of the tank. Okay. Now it says the diagram shows the cross section of this tank. तो ऊपर वाला जो cross section था, जो trapezium था, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. The tank contains water to a depth of 0.3 meters. Okay, 0.3 meters आपका water है. We have to show that W equals 0.84. This is the length W. ये आपको show करनी है that is 0.84. How do we think about this? So we've got some information given. We've got two trapeziums. This is 0.95. This is W. We've got the heights. This is 0.477. This is 0.3. Now, a common mistake here is to assume that the two trapeziums are similar. So that's a common mistake that people do here. That this trapezium and this trapezium, they are similar, but they're not. They're not similar. इसमें similarity आप trapeziums के ऊपर नहीं use कर सकते. Even though the angles are all equal, these figures are not similar. वो angles equal होने वाली property triangles के लिए that works, but it doesn't work for quadrilaterals. Okay, so similarity नहीं है. ये similar figures ये trapezium similar नहीं है. Okay. तो आप क्या कर सकते हो? So one way to think about this is कि आप इसको triangles में convert कर लो. So क्योंकि triangles में तो आप similarity use कर सकते हो. So हमने ऊपर remember हमने triangles draw की थी इस तरह से. हमने एक right angle triangle बनाई थी यहाँ पे. We could use that same idea here. We could say we knew that this length was 0.15. Remember we do that here. मैं यहाँ पे देखें ये draw किया था. देखा था 0.15 है. So we could think of this triangle. इस triangle की हमें height पता है. Height कितनी है? ये total height, this height, we know this. This is 0.477. ये आपके पास बड़ी triangle है. इसकी दो sides पता है आपको, 0.15 here and 0.477 here. Then you've got a smaller triangle inside. What do we know about the smaller triangle? We know the height here, 0.3, but we do not know this side. That's called the side X. Now these triangles are similar. These triangles are similar. Okay. हम क्या कर सकते हैं? ये X की value यहाँ से निकाल लेते हैं. Let's do that. So we can just, take ratio of corresponding sides. We can say X over 0.15, that should equal 0.3 over 0.477. ठीक है, वो similar figures हैं. हमने ये use कर लिया. What do we get from this? यहाँ से हमारे पास X की value आ जाएगी. Let's see what that turns out to be. 0.3 into 0.15 divided by 0.477. And that's giving me 0.09434. ठीक है, मैं ज़्यादा accuracy use कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि final result accurate है. X की value मेरे पास आ गई, that's 0.09434. Now let's think about this. If this is X, यही चीज हम left side पे भी तो कर सकते हैं ना. तो ये length भी कितनी होगी? ये भी X हो जाएगी. ठीक है. और ये middle वाला part कितना है? We know that this part is 0.65. This part is 0.65. Right? So the middle part is 0.65 and we know the value of X. तो W कैसे आ जाएगा? W is going to be 0.65 plus 2 times X because we've got one X here and another X here and दोनों X's को add करना है. अब 2 से multiply कर दें या 0.09434 दो दफा add कर लें, that's your choice. And you see what you get from this, 0.09434. Let's see what we get. 0.65 plus
2 into 0.09434, and that gives me 0.8387. If I were to write it to two significant figures, that's going to be 0.84, and that's what we had to prove there. That's the value of W. Okay, so that was part C here. So again, do not assume that the trapeziums are similar because they are not. वो जो angle similar होने वाली property है कि angle similar हो तो आपकी figure similar होती है, that only works for triangles. It's not going to work for quadrilaterals here. क्योंकि आप देखें छोटे ट्रेपीजियम की भी और बड़े ट्रेपीजियम की भी ये वाली लेंथ है वो तो इक्वल है, वो तो चेंज नहीं हो रही है. सिमिलर फिगर्स के अंदर आपकी इतनी हो सकता कि एक लेंथ चेंज हो रही हो और दूसरी ना चेंज हो रही हो. सो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्राइंगल्स वाली सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी कि एंगल सेम है वो यहाँ पे ट्रेपीजियम्स की मैंने अप्लाई कर सकते, वो डायरेक्टली नहीं करना आप. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन. Part D. Now it says calculate the area of the surface of the water in the tank. Okay. अच्छा देखें ये आपको क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है सिर्फ पानी का. So let's go back to the original figure. Let me actually erase these shadings here. Okay, so this was our tank. इसके अंदर पानी है थोड़ा सा. We know the width of that water in the container. ये W है. तो basically पानी का जो surface है, that's going to be the surface. पानी के ऊपर वाला surface, right? इस surface का आपने area निकालना है. तो एक side तो आपकी W है. This is W. What about this side? The other one? This is 1.6. This side is 1.6. So it's a rectangle. The yellow part is a rectangle. आपने उस rectangle के area निकालना है. W into 1.6. W की value हमारे पास क्या आ रही थी? वो हमारे पास 0.84 आ रही थी. We can use that, or you can actually use the more accurate number, that is 0.8387. Area of the surface of the water, that's going to be 0.8387 into 1.6. So basically rectangle बन रहा था ऊपर जो पानी का surface है, और जो पानी का surface है, that's a rectangle. उस rectangle के area हमने निकाल लिया, length and width. यहाँ से आ जाएगा. Let's see what that turns out to be. Into 1.6, that is 1.342. We can write 1.34 there, rounding it off. That's our result here. Okay. That was the last part of this, and that's question number 5. Let's move on to the next one. Okay. Question number 6. So now we've got this diagram. So this looks like trigonometry, or maybe not. Just the time aa gaya. Acha, distance speed. Let's think about this. The diagram shows a field ABCD. AB is 285 meters, BC is given, and CD is given. ये तीन आपको lengths दी हुई हैं. Kareem and Nabila are running in the field. Kareem starts running from B at the same time as Nabila starts running from D. So they're starting from B and D. Nabila runs from D to C at a speed of 12.2 kilometers per hour. And we've got the distance there. That's 750 meters. 750 meters, yeah. And Kareem runs from B to C. And we've got the distance there. That is 425 meters. So this is 750 meters. And this is 425 meters. Itna distance we run kar rahe hain. Okay. Work out how much time Kareem waits at C before Nabila arrives. Give your answer in minutes and seconds. Correct to the nearest second. Okay. So Kareem is running slower, लेकिन उसने distance कम travel करना है. So उसको कितना wait करना पड़ता है C पर पहुंच के Nabila का? That's what we've got to figure out. Okay, so let's figure out the time taken by both of them. Time क्या होता है? So हम दोनों को यहाँ पे evaluate कर लेते हैं. So let's do it for Kareem and Nabila.
So time is, remember distance over speed. Speed is distance over time, time is distance over speed. So बस rearrange कर लें. Since the speed is constant, आप ये formula use कर सकते हैं. करीम का क्या होएगा? Time, it's going to be distance, that is, अच्छा, you've got to be careful here. Speed उसने दी हुई है kilometers per hour में. Distance उसने दिया हुआ meters के अंदर. तो आपको units का पहले ध्यान रखना है. Meters है और kilometers है, तो you've got to use the same unit. ठीक है, तो इस in meters को हम kilometers में convert कर देते हैं पहले, before we use them. 750 meters, that's actually 0.75 kilometers. 1000 से divide कर दें. 425 meters is 0.425 kilometers. Okay, so what's the time now? For Kareem, that's 0.425 divided by the speed of Kareem, that is 11.5. ये आपके पास यहाँ से time आ जाएगा इसका. Similarly for Nabila, we've got 0.75 divided by the speed, that is 12.2. Let's figure out these two values. देखते हैं हमारे पास time दोनों के क्या आते हैं. 0.425 divided by 11.5, that gives me 0.03695 ये आपने accuracy ज़्यादा रखनी है ताकि eventually आपके answers accurate आ रहे हो. 0.75 divided by 12.2, and that gives me 0.06145. Remember ये time जो दोनों हमारे पास आ रहे हैं, these are in hours. ये आपके पास hours में. आपको क्या चाहिए? Correct to the nearest second आपको answer चाहिए. तो seconds में आपने लेकर जाने हैं end पे eventually. लेकिन हम क्या करते हैं? पहले तो time difference find कर लेते हैं. ठीक है, so कितना wait करना पड़ता है उसको hours में निकाल लें बेशक. Time difference in hours, दोनों को subtract कर लें. So नबीला को टाइम ज्यादा लगा, so इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लें पहले वाला नंबर. देखें आपके पास क्या आ जाता है. Just subtracting that directly on the calculator. Minus 0.03697. So I'm getting 0.02452 hours. ये मेरे पास टाइम आ गया in hours. Okay. Now what I can do is I can actually multiply this by 60 to get time in minutes. इसको 60 से multiply कर देते हैं. 0.02452 into 60, that's going to be time in minutes, right? Hours को minutes में convert करने तो क्या करना पड़ेगा? आप 60 से multiply कर देंगे. इसको 60 से multiply कर देते हैं. We get 1.471 minutes. ठीक है, अगर आपने सिर्फ मिनट्स में आंसर देना होता यू कैन राइट दिस डाउन, लेकिन आपको मिनट्स और सेकंड्स के अंदर देना है, तो हम क्या करेंगे? 1 को ऐसे ही रहने देंगे. मिनट्स तो आगे आपके पास, एंड देन यू गॉट 0.471. 0.471 को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना है, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे. So 0.471 into 60, that's giving me 28.27 seconds. Now it says you've got to give your answer correct to the nearest second. तो इसको round off कर देना आपने. You say this is 1 minute and 28 seconds. That's the result here. ठीक है, so that should be your final result. Yes, is there? That's correct. That's what we get. ठीक है, 1 minute and 28 seconds. All right, let's move on. Now it says B is due east of A and D is due south of A. So B is due east of A, यानी कि A के right side पे B है. You can see that in the figure. A के right side पे B है. And B, D is due south of A. वो भी आपको figure पे नजर आ रहा है. D is below A, right? B is on a bearing of 35 degrees from D. D से bearing जो है वो B की, that is 35 degrees. तो north कहाँ पे बनेगा? From D लिखा हुआ है, D पे north बनाएंगे और वो 35 degrees की bearing बन रही होगी B की. अच्छा, let's go to the figure. Go back to the figure.
डी के ऊपर जो नॉट बन रहा है इससे बेरिंग बी की वो 35 है, so basically this angle is 35 degrees. Okay, so that's what is given. Now what do we want? We want the length AD. AD length चाहिए. Okay. AD ये आपको length चाहिए. This is the vertical length. It's a right angle triangle in which you know this side and you know this angle. आप simple trigonometry use कर सकते हो. So इस angle के हिसाब से this is your base and this is your perpendicular. तो आपके पास base और perpendicular है. Base और perpendicular में कौन सी ratio होती है? It's tan. So you can say tan of 35 is equal to perpendicular. Perpendicular is 285 divided by the base. Base is AD. यहाँ से आपके पास AD आ जाएगा. AD is going to be 285 over tan of 35. You can evaluate this from a calculator, and that's going to give you the result. Okay, so I'm going to take that there in the working part. ये हमें यहाँ पे करना था. Let's see what that gives us. 285 divided by tan of 35. So that's 407.02. That's what I'm getting. So 407 आप लिख सकते हैं. That's 3 significant figures already. That's a result, 407 meters. ठीक है, ये आपको करना था यहाँ पे. Let's move on. Now the next part says calculate the bearing of C from D. Bearing of C from D. D पे north again. और आपने C की bearing calculate करनी है वहां से. Let's go to the figure. C की bearing from D. So basically we want this angle. ये पूरा angle चाहिए हमें. Okay. Now we already have this part of the angle. This is 35 degrees. So essentially the problem is to calculate this angle. जब ये angle मिल जाएगा हमें, तो हमें total angle मिल जाएगा. So we've got to figure out this angle. Now let's try to think about this from the figure. Now remember, we've got another length on the figure. This is 407. So we know also this length now. This is 407 AD. So how do we think about this? इस triangle के अंदर ये जो triangle BCD है, triangle BCD, in this triangle we only know two things. As of now, we only know that this side is 425 and this side is 750. दो lengths से तो आप कुछ नहीं निकाल सकते. You need one other piece of information. What we can do is we can actually figure out the length BD here. BD length निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? You see, this is a right angle triangle. ABD is a right angle triangle. इसमें आपको perpendicular और base पता है. आप उनका hypotenuse निकाल सकते हैं. उस दैट कोसाइन रूल हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास एक और साइड होती है, राइट? तो हमें तीनों साइड्स तो नहीं पता अभी. So we have to figure out the third side first, right? So once we have figured that out, then we can use the sine rule or use cosine rule. So हम क्या कर सकते हैं? हम 285 और 407 को यूज करके ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं. ठीक है, लेट्स डू दैट. BD square, BD आपका हाइपोटेन्यूज है. BD square is equal to 285 square plus 407 square. That's going to give us the length BD. उनके squares को add कर देंगे, square root ले लेंगे. 285 square plus 407 square, and then square root of that is 496.86. That's the length BD. Length BD भी आ गया हमारे पास. We'll take this again to that working part. आपको वहीं पे show करना है. This is the length BD. हमने length BD figure out कर ली. ठीक है, ये आ गई. अब जब length BD भी आ गई हमारे पास, we know that this is 496.86. Now we've got a triangle in which we know three sides. Three sides पता है हमें. एक angle find करना है. Let's call this theta. तीन sides पता है, एक angle find करना है. We can use cosine rule there. Okay.
Cosine rule कैसे use करते हैं? Remember the formula that we've got for that? We have a square equals b square plus c square minus 2bc cos of a. ये जो साइड लेफ्ट साइड पे आ रही होती है इसके ऑपोजिट एंगल आपके पास इधर होते हैं, ठीक है? तो जो एंगल है उसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? 425. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? This is 425. On the right side, we've got 750 ka square plus 496.86 squared minus 2 into 750 into 496.86 into cos of theta. Now, if you remember the other form of the formula, that's also fine. अगर आपको वो याद है, वो याद करनी पड़ेगी, of course. अगर आपने वो use करनी है, cos theta जिसमें subject होता है already, that's easier to use in this case जब आपको angle find करना होता है. But of course, you have to remember that. Okay, तो आप कर सकते हैं. अगर आपको वो use करना है, that's also fine. I'm using this. अब इससे हम सिर्फ theta की value निकालेंगे. Again, I'm going to take the sum there. यहाँ पे calculation कर लेते हैं नीचे. या मैं figure out करना. ठीक है? Let's do this now. Okay, so let's actually simplify everything first. 425 squared. That is, let's actually leave it like this. हमारे पास क्या आ जाता है? 425 squared minus 750 squared minus 496.86 squared. That equals minus 2 into 750 into 496.86 into cos theta. ठीक है? अब ये पूरा जाके हम लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर सकते हैं. 425 squared minus 750 squared minus 496.86 squared whole divided by minus 2 into 750 into 496.86 on the right side. You've got cos theta. Now you can put this whole thing on your calculator. Make sure कि आप calculator में values सही input करें. You should have a calculator that has this fraction button. That's going to make your life easier. ये आपके पास ये calculator होना चाहिए. इस पे ये fraction button है ताकि आप directly उसके ऊपर input कर सकें. So let's do that. I'm going to do that in my calculator and see what I get from this. 425 squared minus 750 squared minus 496.86 squared. In the denominator, I've got minus 2 into 750 into 496.86. So this is giving me 0.8436 on the left side. ये मेरे पास cos theta आ गया. अब इसका inverse ले लें, cos inverse of my answer here. And that gives me 32.475, or you can say 48. ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई. ठीक है? उस फिगर के अंदर जो मैंने ऊपर फिगर ड्रॉ की हुई थी, जो उसने फिगर दी हुई थी, इसमें थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 32.48. थीटा आ गया. अब इसमें क्या करना है? बेयरिंग चाहिए थी आपको तो टोटल एंगल चाहिए था, ये पूरा एंगल. तो क्या करेंगे? 35 में ऐड कर देंगे वो, तो हमारे पास bearing आ जाएगी. So bearing is going to be 35 plus 32.48, and that's going to give us the result. It's going to be 67.48 degrees. So उसने ऊपर कोई instruction तो नहीं दी हुई? No. So we can write it like this. That's okay. But remember, it's bearing. So generally हम क्या करते हैं? इसके left side पे 0 लगा देते हैं ताकि ये decimal से पहले 3 numbers हो जाए हमारे पास. That's better. So our result is going to be 067.48 degrees. You can write it like this, or you can say 0.5 degrees, and all. That's also okay. That's your final result here. That's the bearing that we wanted to calculate. ठीक है? Okay. Let's move on. Question number 7. Now it says here are the first 4 terms of a sequence, and now we've got sequences. We have to find an expression for the nth term of the sequence. So हमें एक तो linear sequences को करना आना चाहिए.
we've got the sequence 1, 7, 13, and 19. So you see the difference is 6 here, 6, 6. It's constant difference. So ये linear sequence है. उसका हमारे पास एक formula होता है nth term का. That's a plus n minus 1 times d. उसमें values input कर दें बस. A is the first term. That's 1. 1 plus n minus 1 times the difference. What's the difference? 7 में से 1 minus किया. That's 6. Difference is 6. यहाँ पे आपके पास 6 difference आ गया. Let's simplify this. We get 1 plus 6n minus 6. And that is 6n minus 5. That's your nth term of this formula. Okay. Now the second part says, Lee says that there are no even numbers in the sequence. Okay. Now, if you look at the pattern, it's pretty obvious there, right? So 1, 7, 6 add करते जा रहे हैं, तो even number तो कोई नहीं आ रहा, सारे odd numbers ही आ रहे हैं. But it says, use the expression for the nth term. Okay, so use this expression to explain why he is correct. Why is there going to be no even number in the sequence? अब यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा. It's quite different from what you usually get in sequences. I haven't seen a question like this before. But how would you think about this? Nth term का formula ये है आपके पास. There are two parts of this. एक part आपका क्या है? 6 times n. Now, if you think about it, 6 into n, 6 into some number, ये तो हमेशा even होएगा. 6 itself is an even number. So 6n का मतलब है 6 times some number. तो किसी भी even number को आप जिस मर्जी number से multiply कर दो, ये हमेशा even result देगा आपको. So 6n is basically even. ये आपका part even है. ठीक है? Because 6 times anything is going to be even. 5 is an odd number. So you got 6 and minus 5. 5 is an odd number. जब आप किसी even number में से odd number subtract करते हो, what's the result? Even minus odd number. You just leave it like this. You can say एक number even है, एक odd है. Even minus odd number, that always gives you an odd number. The final number आपका हमेशा odd ही आ सकता है, even नहीं आ सकता है यहाँ से. Right? So let me just write that down on the side. Even plus minus even number हमेशा even number होता है. Odd plus minus odd number ये भी हमेशा even होता है. Right? Odd numbers को 7 plus 5 for instance, 7 minus 5 हमेशा even आएगा. लेकिन जब एक even हो और एक odd हो, वो result हमेशा आपके पास odd आता है. So this is this third case here. एक even है, दूसरा odd है. Even minus odd is going to give you an odd number. So that's going to be your final result here. So you say, so you basically argue like this, कि एक even number है, एक odd number है, subtract करेंगे तो result has to be odd for that. Okay? Achha. Now the next part says, here are the first 4 terms of a different sequence. Find an expression for the nth term of the sequence. Okay, so now you got fractions. Your पास fraction आ गए. अच्छा, आपको सिर्फ एक type of sequence का formula याद होना चाहिए. वो क्या है? वो आपके पास ये a plus n minus 1 into d. That's mandatory. Quadratic sequence का अगर आपको याद है, so that's good. वो कभी आपको नहीं समझ आता तो आप लगा सकते हो, but वो भी जरूरी नहीं होता. आपको हमेशा question समझ आ सकता है किसी और तरीके से. पहले तो linear sequence हम देख लेते हैं. क्या ये एक linear sequence है? 4 over 16 minus 2 over 9. Just try that. 4 divided by 16 minus 2 divided by 9. What does that give me? So ये difference मेरे पास आता है 1 over 36. Okay. इन दोनों को subtract करके देख लेता हूँ मैं. 8 divided by 25 minus 4 divided by 16. That is giving me 7 over 100. तो difference तो constant नहीं आ रहा. तो ये linear sequence तो नहीं है. वो formula में नहीं लगा सकता. अच्छा, जब वो नहीं लग रहा, अब आपको देखना है, इसको logically सोचना है कि अच्छा इसको मैं क्या कर सकता हूँ. तो normally क्या होता है, इस तरह जब दो numbers आ रहे होते हैं ना, तो अगर आप देखें न्यूमरेटर में हो सकता है कोई और सीक्वेंस बन रहा हो. तो if you think about this, न्यूमरेटर में देखें 2, 4, 8, 16. Does that remind you of something? These are powers of 2, right? 2 फिर 2 का स्क्वायर is 4, 2 का क्यूब is 8, 2 का 2 raised to the power 4 is 16. इसी तरह जो डिनोमिनेटर है उसमें कुछ और चल रहा है. 9, 16, 25, 36. Again, does that remind you of something? 9, 16, 25, 36. These are all square numbers. 9 भी स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है, 36 भी स्क्वायर है. तो आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से सोचें. ठीक है. अब इसका तरीका क्या होता है?
आप इसको ना लिख लें इस तरह से, आप इसको इस तरह से लिख लें, you say you've got the first term, देखो first term आ गई, first number, second number, third number, fourth number, and then fifth number, and so on. And then at some point you'll have the nth number. Okay, now what about the first number here? We've got 2/9, and we've got 4/9, sorry, 4/16. Then we have 8/25. We have 16/36. You can already guess के next number क्या होना चाहिए, 16 के बाद क्या आना चाहिए, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5 क्या होएगा, 32 होगा. नीचे squares चल रहे हैं, 25 is 5 square, 36 is 6 squared, next should be 7 square, that should be 49. तो आपको pattern तो पता चल गया. अब nth term कैसे निकालें? Let's write this sequence down like this then. अब यहाँ पे लिख दें, this is 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4. That's what is happening in the numerator. What about the denominator? You've got 3 power 2, and you've got 4 power 2, 5 power 2, 6 power 2, and so on. So that's the pattern that you're getting from this. अब आप इसको देख लें कि अच्छा अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है, तो 1 को यूज करके what are you getting? 2 power 1, and then 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4. तो basically 1 में 2 power 1 हो रहा है, सेकंड में power 2 आ रही है, थर्ड में power 3 आ रही है, फोर्थ में power 4 आ रही है. तो nth में क्या हो जाएगा? nth में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 power n in the numerator, right? So जो भी ऊपर नंबर था वो यहाँ पे पावर में आ रहा है. So that's exactly what you're doing here. What about the denominator? नीचे क्या हो रहा है? जब ऊपर 1 आता है तो नीचे क्या आ जाता है? यहाँ पे देखें पावर्स तो सारी 2 ही आ रही है, पावर्स में ये सारे सबका 2 है, तो वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो पावर तो 2 ही होगी. So we know the power is going to be 2. पावर में 2 ही आ रहा होगा. But what are we going to have inside the power? Let's think about that. जब ऊपर 1 है तो नीचे 3 आ जाता है. जब ऊपर 2 है तो नीचे 4 आ जाता है. जब ऊपर 3 है तो नीचे 5 आ जाता है. So what is actually happening? जो भी ऊपर नंबर होता है उसमें 2 ऐड करते जा रहे हैं. जब ऊपर 4 है तो नीचे 6 आ रहा है. So जब ऊपर n आ जाएगा, तो नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? You're going to have n plus 2 there. So basically जो भी ऊपर नंबर आ रहा था उसमें 2 ऐड करते तो आपको ये नंबर मिल जाता था. 4 plus 2 is going to be 6, right? 3 जो ऊपर था नीचे 5 था, वो 3 plus 2 आपको 5 दे रहा था. तो अगर वहां पे n आ जाता है, you say that's going to be n plus 2, and that's going to be the nth term of the sequence. Okay, so that's how you would think about this. ये आपके पास इसकी nth term आनी थी. ठीक है, तो again there's no direct formula for this. आपको ये थोड़ा सा इस तरह से सोचना पड़ेगा, इस तरह से पैटर्न लिखेंगे आप कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स आपके पास क्या आ रही हैं, और उसके हिसाब से फिर nth टर्म में वही पैटर्न अगर आप करते हो तो उससे आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए. ठीक है, okay. We've got another sequence now. Now it says the nth term of another sequence is given by this. उसने nth term का formula आपको बता दिया. The first term in the sequence with a value greater than 2000 is uk. Find the value of k. All right, how do we think about this now? Nth term of another sequence is given by this. The nth term का formula दिया हुआ है. Nth term आपको क्या बताती है? आपको आंसर बताती है कि रिजल्ट आपके पास क्या आता है. उसने कहा है ये जो आंसर आपके पास आएगा un equals this is 3n square minus 6n plus 5. ये आपके पास है. 2000 से जो पहली बड़ी वैल्यू है that is uk. So basically uk is greater than 2000. Okay, तो बेसिकली जब n की वैल्यू k है, जब n की वैल्यू k है तो क्या होगा? आपके पास ये जो नंबर है वो 2000 से बड़ा होगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, n की जगह पे k डाल देते हैं. We say uk is equal to
3k²। अगर nth टर्म ये है तो kth टर्म क्या होगी? That's going to be 3, n की जगह k डाल देंगे, 3k² minus 6k plus 5. We are basically looking for when this thing is greater than 2000. तो आपने essentially ये inequality solve करनी है, 3k² minus 6k plus 5 greater than 2000. ये inequality solve करनी है। लेकिन मसला ये है कि हमें inequality solve करनी आती नहीं है ना? inequality solve करनी तो नहीं आती हमें। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज तो मैं आती है सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इसमें ए लेवल्स में आप पढ़ेंगे और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तो हमें सॉल्व करनी नहीं आती। सो व्हाट डू वी डू दैट? व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली ट्रीट इट लाइक एन इक्वेशन। इसको एज एन इक्वेशन ट्रीट करें और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लें और फिर उसके हिसाब से देखें कि अच्छा आपकी k की वैल्यू क्या हो सकती है, बिकॉज k हैज टू बी एन इंटीजर। k को इंटीजर होना है ना, तो उसके हिसाब से फिर आप k की वैल्यू लिख सकते हैं। So let's treat this as an equation instead. So rather than solving this inequality, जो हम नहीं solve हमें करनी आती, हम क्या करते हैं, इसको as an equation treat करते हैं। We say this is 3k² minus 6k plus 5 equal to 2000. ये equation solve कर लें और उसे देखें आपके पास क्या आता है। 3k² minus 6k plus 5 minus 2000, that's going to be minus 1995 equals 0. Let's see if we can factorize this. 1995 divided by 3. अच्छा, पहले तो simplify कर लेते हैं। It's going to be k² minus 2k minus 665 equal to 0. Now, can we factorize this? Let's think about it. Minus करके 2 आ रहा हो, 20 times 18 क्या होता है? Okay, so we need bigger numbers, 29 into 27, smaller, 25 into 23, doesn't work, 27 into 25. Okay, 27 into 25 gives me 675, 26 into... Okay, so factorization to nahi ho rahi, I can't find any factors. So what we have to do is we have to use the quadratic formula. Quadratic formula use kar le. Let's see what we get from that. Minus b, ये आपने working show करनी है। वर्किंग नहीं शो करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व करके आपने आंसर नहीं लिख पाना यहाँ पे, वर्किंग शो करने के मार्क्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो माइनस बी, सो दैट्स गोइंग टू बी माइनस इनटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर माइनस 4 into 1 into -665 divided by 2 times 1. What do we get from this? We get 2 plus minus square root of 4 plus 4 times 665. इसका square root, that is square root के अंदर मैंने evaluate कर लिया. This is giving me 51.61 whole divided by 2. इससे मेरे पास k की दो वैल्यूज आ रही हैं, k की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। 2 plus 51.61 divided by 2, that gives me 26.8, and the other is going to be negative. So negative तो हो नहीं सकती, यहाँ पे लिख देते हैं 2 minus 51.61 divided by 2, that's minus 24.8. This is not possible. Okay, number of term जो है वो negative तो हो नहीं सकता, so we're not really going to consider this possibility. तो जब 26.8 आता है, जब k की वैल्यू 26.8 होती है, तो हमारे पास जो टर्म आती है that is going to be 2000 exactly. ठीक है। अब 26.8 तो कोई टर्म हो नहीं सकती, डेसिमल में तो टर्म नंबर नहीं हो सकता, हमें इससे बड़ी वैल्यू देखनी है। 2000 एग्जैक्टली नहीं चाहिए हमें, इसलिए वैल्यू ग्रेटर देन 2000। तो 2000 से बड़ी वैल्यू में कब मिलेगी? जब k की वैल्यू या n की वैल्यू 26.8 से बड़ी होगी। 26.8 से बड़ा पहला इंटीजर आपके पास कौन सा है? You've got 27. So the first integer that you get that's bigger than 26.8, that is 27. तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? आप कहोगे k is 27, ये k की वैल्यू यहाँ पे 27 लग देंगे। Okay, and that's what we had to do here.
That's part C of this. Now that was quite tricky. Again, that's probably another reason why the threshold for this paper was 48 out of 100 for an A, because this was again a quite tricky part. Let's move on to question number 8 now. Question number 8, part A. A is the point -2, 1, and B is the point 3, 3. We've got these 2 points. We have to find the length of the line AB. Distance formula laga dein. Again, working show karni hai. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. हम यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2. What do we get? 3 minus -2, that's going to be 3 plus 2 whole square, plus 3 minus 1 whole square. Okay, ये evaluate कर लें. ये बस क्या आ जाता है 5 square and 2 square, that's going to be square root of 29. And what does that turn out to be? That's 5.3851. You can either write 0.385 if you want, or you can round it off to 5.39, and that's your final result there. Okay. Achha. ABCD is a square with sides AB, BC, CD, and DA. Point C is below the x-axis. Find the coordinates of the point C. C के coordinates हमें figure out करना. Okay. Now, how do we think about this? We've got the point A given and the point B given. आपको C find करना. Now, it's often helpful in problems like these to just sketch a diagram. इसको sketch कर लें, and then think about it. तो A और B points तो हमें पता है ना. So हम एक point यहाँ पे अगर mark कर लें, let's say this point is A. इसके coordinates क्या हैं? -2 and 1. And we've got another point B. B कहाँ पे होगा A से? अगर आप देखें -2 और ये 3 तो right पे होना चाहिए. B point और 1 and 3 तो ऊपर भी होना चाहिए. तो B जो है वो A के right पे ऊपर होएगा. Right पे ज़्यादा और थोड़ा सा ऊपर. So let's say this is point B somewhere here. This is 3 and 3. A B आपका आपकी लेंथ ये होगी इस तरह से. अब C और D किधर आएंगे? ABCD has to be a square. ABCD has to be a square. अब square या तो आप ऊपर को इस तरह बना सकते हो. That's one possibility. उसमें C यहाँ पर आएगा, D यहाँ पर आएगा, लेकिन उसने कहा C is below the x-axis. अब ये ऊपर अगर आप बना दोगे तो वो below the x-axis तो नहीं होगा, because ये y coordinate already 3 है, तो वो तो C ऊपर चला जाएगा. So C आपका कहाँ पे होना चाहिए? ये जो फिगर बननी चाहिए वो उल्टी बननी चाहिए कि C should be below there. ये नीचे क्या होना चाहिए? Okay. और D भी इस तरह नीचे होना चाहिए. So your square might look something like this. तो कुछ इस तरह का आपका स्क्वायर होगा. This should be point C, this should be point D. अब आपको करना क्या है? आपको फिगर आउट करना है ये पॉइंट C किस तरह से, कि ये पॉइंट क्या है. Now, how can we think about it? We know that these angles are all 90. It's a square, right? So this angle is supposed to be 90. This is 90. This is 90. This is 90. Now, again, there could be multiple ways of thinking about it. One possibility could be कि आप इसको इस तरह सोच लें कि point B से आपका point A is right like this. ये आपका point A है. अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें 90 डिग्रीज तो आप पॉइंट C पे पहुंच जाओगे. Does that make sense? अगर आप B को एज अ सेंटर ऑफ रोटेशन रखो, B को एज सेंटर ऑफ रोटेशन रखो और आप इसको रोटेट करो पॉइंट A को इस तरह से, तो आपका वो पॉइंट A जो है पॉइंट C पे पहुंच जाएगा. That's one way to think about this using transformations. क्या पॉइंट B को सेंटर ऑफ रोटेशन रख के A को रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज, आप C पे पहुंच जाओगे. Now, how do you do that rotation? तो हम क्या कर सकते हैं? हम देखें पॉइंट A जो है, this is 3, this is -2.
how many units are we on the left side here? Left side के ऊपर हमारा कितने units बन रहे हैं? 5 units. और downwards कितने units बन रहे हैं? Downwards हमारे बन रहे हैं, this is 3, this is 1, so downwards we've got 2 units. ठीक है, इसको रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 5 जो है वो नीचे चला जाएगा इस तरह से. So you got 5 here like this. ये 5 आ गया. And we've got this 2 down there as well. ये आपके पास vertical था इस तरह से, ये इस तरह चला गया. This is supposed to be 2. तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो ये x axis पे 3 है, x coordinate 3 है, उसमें आप ये 2 ऐड कर दें. So c का x coordinate क्या हो जाएगा? C का x coordinate is going to be 3 plus 2. So that's basically coming from this 3 and this 2. ये दोनों ऐड कर दिए. What about the y coordinate? Vertically 3 आपका original था y coordinate. उसमें आपने कितना नीचे जाने? आपने 5 units नीचे जाने 3 से. 3 में से 5 माइनस कर दें. 3 minus 5. So again, where is that coming from? That's coming from this point here. And 5 is coming from this point here. ये आपके पास C के coordinates हो जाएंगे, which turn out to be 5 and minus 2. So you'll say C is 5 and minus 2. So that's one way of thinking about this, using rotation, using B as the center of rotation. उस तरह से rotate कर लें, अब उसको graphic इस तरह सोच सकते हैं. Okay, so that's your point. That's going to be your point C. Okay, again, that was quite tricky. Point P is the point -7, 8, and Q is the point 9, 4. Find the coordinates of the midpoint of PQ. अच्छा, उसका पिछले part से कोई relation नहीं है, वो ABCD थे. यहाँ पे PQ कुछ और points आ गए. We've got to find the coordinates of the midpoint of the line PQ. Midpoint का formula लगा दें. x1 plus x2 over 2, -7 plus 9 over 2, and 8 plus 4 over 2. ये देख लें क्या आ जाता है. 2 over 2, that's 1. 12 over 2 is 6. So that's 1, 6. That's the midpoint. Now it says find the equation of the perpendicular bisector of PQ. Perpendicular bisector क्या होता है? अगर आपके पास 2 points हैं, let's say one is point P here and the other is point Q here. Perpendicular bisector is going to be the line that passes through the midpoint of PQ and is perpendicular to PQ. अब midpoint तो आपने निकाल लिया already. Let's call this point M. M के coordinates क्या हैं? 1 और 6. You already have the midpoint. Equation of perpendicular bisector is a straight line, right? Straight line की equation के लिए आपको क्या चाहिए होता है? You need 2 things: gradient and a point. Point तो आपके पास already आ गया, 1, 6. You already have this point 1, 6. Gradient चाहिए. That's the only other thing that you need. Okay, sorry. Let me go back there. Okay, so point आपके पास आ गया, आपको सिर्फ gradient चाहिए. Gradient कैसे निकालेंगे? हम PQ का gradient निकाल लेते हैं पहले. Let's find that. Gradient of PQ. Let's call this x1, y1. This is x2, y2. y2 minus y1 or x2 minus x1. So that's 4 minus 8 over 9 minus 7, which becomes 9 plus 7. That's minus 4 over 16, which is minus 1 over 4. ये आपके पास PQ का gradient आ गया. What about the gradient of the perpendicular bisector? Perpendicular lines का gradient क्या होता है? एक दूसरे का negative reciprocal होता है. So if you've got one gradient here, तो perpendicular का gradient क्या हो जाएगा? इसका negative reciprocal. तो एक sign change कर देंगे और इसका reciprocal ले लेंगे. तो ये minus है वो plus हो जाएगा और इसका reciprocal it's going to be 4. आपके पास क्या हो गया? Gradient आ गया. This is M, and you've got the point. The point is 1 and 6. This is x1 and y1. तो आप क्या कर सकते हैं? You can use this equation. Y minus y1 equals m into x minus x1.
ये use कर लें, you get y minus 6 equals 4 into x minus 1. And then you simplify that. इसने कोई specific form मांगी या नहीं मांगी, but you can simplify this. And you see what you get from that. Y minus 6 equals 4x minus 4, and y equals 4x plus 2, and that's the equation. Again, if you do not know this form, that's perfectly okay. It's not compulsory for you to know this. Y equals mx plus c use कर लें. You know that method. उससे भी आपके पास ये same result आ जाएगा, and that's going to be fine as well. This is much quicker. But you could do the other form as well, and that's going to be okay. So you get y equals 4x plus 2 from this. That's the equation of the perpendicular bisector. Okay, let's move on to the next question. Now we've got circle theorems. We've got these points A, B, and C. These are points that lie on the circle, and the center is O. X is the midpoint of AB, and Y is the midpoint of BC. We've got this point X and this point Y. These are the midpoints of those chords. And we're given that AB equals BC. Okay, so these lengths are equal. AB and BC, the chords dono equal. So first of all, we have to show that the triangle AOX, which is this triangle, that is congruent to BOY, and that is this triangle. You have to show that these two triangles are congruent. We have a reason for each statement you make. Okay, so congruency के आपके पास वो 3 different cases होते हैं. उनमें से आप देख सकते हैं कि आप इसमें, in fact, there are 4 different possibilities that you can use. हम उसे देखते हैं आप कौन सी अप्लाई कर सकते हैं. Okay, let's think about it. अच्छा, सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है OA and OB, they are both radii, तो वो दोनों equal होने चाहिए, दोनों radius है. So we can start from that. We can say OA is equal to OB. So basically both are radii, दोनों radius है. ठीक है? That's the first thing that we can do. Then, so we know this is equal now. और क्या कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं, we know कि X and Y are the midpoints. What that means is AX or BY, they have to be equal. Why? Because यहाँ पे लिख लेते हैं AX should be equal to BY. What's the reason for that? Reason लिखना जरूरी है. X and Y are midpoints of AB and BC respectively. वो दोनों midpoints हैं, इसलिए ये दोनों lengths equal होनी चाहिए. AX should be equal to BY. So ये lengths भी equal आ गई. That's another length that we've got equal. Now, what about the third length? Can we prove somehow this length is equal to this length? We'd actually say कि क्योंकि chords equal and the distance from the chord should be equal. Another idea could be क्योंकि x और y midpoints हैं, क्योंकि x और y midpoints हैं, ये जो angles हैं यहाँ पे वो 90 होने चाहिए. Angle आपके पास 90 होने चाहिए. What's the reason for that? A point coming from the center of the chord to the a point coming from the center of the circle to the midpoint of a chord, it always makes a 90 degrees. तो mid x और y midpoints हैं, तो आपके angle 90 degrees होना चाहिए. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं the angles AXO, angle AXO and the angle BYO, they're both equal and they're both equal to 90 degrees. दोनों 90 हैं. What's the reason for that? We can say line coming
from center of circle to midpoint of chord makes a 90 degrees. ये आपके पास तीसरा angle equal आ गया. So we've got a right angle, we've got the hypotenuse that they're equal, and we've got another side that is equal. तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे AOX and BOY are congruent using which property? You'll have to write that down. कौन सी property? RHS यहाँ पे use कर रहा हूँ मैं. ठीक है? So that's one possibility. आपको भी RHS property यहाँ पे apply हो रही है. That's why they are congruent. Okay, let's move on. Now part B says the circle has radius 4 centimeters and AB is 7 centimeters. Calculate the angle BOA. Okay, radius 4 है, AB 7 है. Radius is 4, so that means OA is 4, OB is 4. AB is 7. Okay, AB, this whole length is 7. ये पूरी length 7 होने का मतलब क्या है? This is 3.5 and this is 3.5. Okay, X midpoint है. What we want is, we want the angle BOA. So we're interested in this angle. BOA, ये वाला angle चाहिए. Okay, now this angle here and this angle here, they are both equal, right? Again, the reason for that is ये आपके पास lengths equal है, ये 90 degrees बन रहे हैं, दरम्यान वाली length equal है, तो ये दोनों triangles भी congruent है. AXO and BXO, they are both congruent. तो ये angles दोनों equal हैं. आप कोई भी एक find कर लें, उसको 2 से multiply कर लें. So let's find the angle on the left side. ये angle find कर लें. It's a right angle triangle. क्या कर सकते हैं? X के हिसाब से 3.5 is perpendicular और 4 hypotenuse है. Perpendicular hypotenuse में कौन सी ratio होती है? Sine. So we can say sine X is equal to perpendicular, which is 3.5 over the hypotenuse, that's 4. यहाँ से आपके पास X angle आ जाएगा. Let's figure that out. Sine inverse of 3.5 over 4. Let's figure that out. Let's see what that gives us. This is 61.04 degrees. तो पूरा angle क्या हो गया फिर? इसको 2 से multiply कर दें. Angle BOA, that's going to be 2 into 61.04, and that's going to give it the final result. That turns out to be 122.089. So that's going to be 0.09. ये आपका final result आ गया. इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, इसको 0.09 भी लिख सकते हैं. That's okay. ठीक है? So that's your result. Now it says calculate the shaded area. What's the shaded area? Shaded area is basically this region here and this region here. Now again, if you think about this, उसने आपसे पहले क्या प्रूव करवा लिया है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है. और आपको पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब है ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है. तो बेसिकली सारे ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ. इसका मतलब क्या है? जो दोनों शेडेड रीजन्स भी आपके पास आ रहे हैं, दे आर आल्सो इक्वल. ये जो साइड वाले रीजन्स हैं, ये वाले और ये वाले, दे आर आल्सो इक्वल. तो आप कोई भी एक रीजन फाइंड कर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास टोटल शेडेड रीजन आ जाएगा. ठीक है? हाउ कैन वी फाइंड एनी वन ऑफ द 2 शेडेड रीजन्स? तो आप क्या कर सकते हैं? Now we've got this information. We've got this sector. ये sector आ गया हमारे पास. This is the sector. इस सेक्टर के एरिया निकाल लें, उसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर दें. ठीक है? एंगल पता चल गया हमें. एंगल क्या था? दिस वाज 122.09. 122.09 ये हमने फिगर आउट कर लिया ऑलरेडी. We know the sides. We know that this side here is 4. This side is also 4. और एंगल भी पता है. Yeah, so we know everything now. So area of the shaded region, what is that going to be? अच्छा, ये तो 2 parts हैं.
तो हम पूरे पार्ट को, so let's actually find the area of one segment first. Area of one segment एक निकाल लेते हैं, end पे 2 से multiply कर देंगे पर area of one segment is basically area of the sector minus the area of the triangle. पूरे सेक्टर का निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे. सेक्टर का एरिया कैसे होता है, कैसे आता है? थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ट्रायंगल के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू ए बी साइन सी. थीटा क्या है, 122.01 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज 4. यहाँ पर सेक्टर आ गया. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट हाफ इंटू ए बी साइन सी. दोनों साइड्स कौन सी हैं? एक रेडियस यहाँ पर आ रहा है, एक रेडियस यहाँ पर आ रहा है. बोथ रेडियस आर 4, both sides are 4. उनके दरमियान वाला एंगल भी आपको पता है, that's 122.09. Let's just use that. We've got 1 over 2 into 4 into sine of 122.01 degrees. And that's going to give you the area of one part of that shaded region. Let's figure this out. 122.01 divided by 360 into 16 pi minus 8 into sine of 122.01. Sorry, 01 था ये या 09 था? Okay, sorry, this was actually 09. The angle was 09. We correct that. I need to change that there. 09. So it's 09. So this is giving me 10.269. ये मेरे पास एक सेगमेंट का एरिया आ गया. What about the total shaded region? Total shaded area, what is that going to be? Total shaded area मेरे पास आ जाएगा, इसको 2 से multiply कर देंगे, 2 into 10.269, and that's going to give me the result. Let's see what that turns out to be. Multiply this by 2, that is 20.538. That's 20.54. That's the total region. Total shaded area 20.54 centimeters square. ठीक है, ये आपके पास total shaded area आ गया. Let's move on. Now we've got question number 10. It says Farah and Abid each play a number game. They both start with the same number. Farah subtracts 4 from the starting number and multiplies the result by 11. Achha, they're both starting from the same number. So that's an important piece of information. Dono same numbers se start kare. Farah subtracts 4 from the starting number and multiplies the result by 11. Abid multiplies the starting number by 5 and adds 1. They both end up with the same answer. Okay, end result be same. Form an equation and solve it to find their starting number. Achha, let's say this the starting number is x. So Farah kya kar rahi hai? She's subtracting 4. So subtracting 4 from the starting number and then multiplies the result by 11. So ye pura jo result hai isko 11 se multiply kar deti hai. What is Abid doing? He multiplies the number by 5. तो पहले वो 5 से multiply करता है, that's 5 times x, and then adds 1, so 5x plus 1. जो result है वो दोनों same होने चाहिए. इन दोनों को equate कर देते हैं. We got 11 into x minus 4, that equals 5x plus 1. We just have to solve this equation. We get 11x minus 44, that equals 5x plus 1. 6x equals 45 and x equals 45 over 6. That turns out to be 7.5. So they are both going to be they both start from 7.5. That's the value of x. Okay, now it says rearrange this formula to make c the subject. C ko subject banana hai. What do we get? A into c plus 1, that equals b into 4 minus c. We simplify everything and bring all the c terms on the left side. AC plus a, that equals 4b minus bc. AC plus bc equals 4b minus a. Take c common here, and that gives us c into a plus b equals 4b minus a, and c equals 4b minus a divided by a plus b. And that's our final result. 4b minus a over a plus b. ठीक है,
Now it says expresses a single fraction in its simplest form. This fraction LCM ले लेंगे, denominators multiply हो गए 3x minus 2 into 1 minus x. ये multiply कर दें इस तरह से 5 into 1 minus x. Remember we've got a minus sign in the middle. 5 into 1 minus x minus 4 into 3x minus 2. ठीक है. What do we get from this? We get 5 minus 5x minus 12x plus 8. उसने कहा simplified form में आंसर देना, तो denominator को भी simplify कर दें. What does that give us? That gives us 3x minus 3x square minus 2 plus 2x. What do we get from this? In the numerator, we have 13 minus 17x, and in the denominator, we have 3x and 2x, and this minus 3x squared plus 5x, and the constant, that is minus 2. And that's your final result here. That's 13 minus 17x divided by minus 3x squared plus 5x minus 2. And that's going to be your final result here. And that's the end of the paper. Achha, so last question, it was so straightforward, and it's like 9 marks. So that basically tells you it's extremely important to have a look at the whole paper before you start, ताकि आपको पता हो कि आगे कोई आसान questions तो नहीं आ रहे. अब उसने इतना आसान question बिल्कुल last पे end पे रखा हुआ है. So if you get stuck at another question in the middle, तो उसमें बहुत मसला हो सकता है कि आपके पास हो सकता है ये एंड पे इसके लिए टाइम ही ना बचे. सो यू गॉट टू बी केयरफुल. सबसे 2 काम आपने जरूर करने हैं. स्टार्ट में पूरा क्वेश्चन जल्दी से पूरा पेपर जल्दी से स्किम करना है, एंड टेक 2-3 मिनट्स, हैव अ लुक एट द होल पेपर, ताकि आपको पता हो कि अच्छा आसान क्वेश्चन एंड पे तो नहीं पड़े हुए, ताकि आप उसके लिए टाइम बचा के रखें. और दूसरी चीज, डू नॉट गेट स्टक एट एनी वन क्वेश्चन. इफ यू कैन नॉट फिगर समथिंग आउट in a few minutes, move on. End पे come back to that later. दरम्यान में आपने stuck नहीं होना, ताकि आपके easy question end के ऊपर भी miss ना हो जाए. Okay, so that was this paper from the July series. I hope that was helpful. We are going to end the session here. For the next session, we are going to be doing the other May-June 2021 paper, जो actually असल में हुआ था, पाकिस्तान में नहीं हुआ था, लेकिन बाकी countries के अंदर जो 2021 वाला paper था May-June का. We'll hopefully do that tomorrow, inshallah. You can find a lot of other content in the description below as well. You'll find solved yearly past papers from 2016 to 2020. You've got all variants to solve there, most of them. And you also have topical past papers and also topical revision videos. The links for them are also posted in the description below. I hope you'll find them helpful. I'll see you again in the next session. All the best for your preparation. Allah Hafiz.